Hello dear students, so today we will discuss about carbocation. This is one of the important part in organic chemistry. So in this class we have to understand how the carbocation is formed and what is the nomenclature of that carbocation and what is the hybridization and their stabilities. So first of all, how the carbocation is formed. When a covalent bond between two carbon atom during heterolytic bond fission happen, that time only carbocation is formed. Let me explain you the example. Heterolytic bond fission means suppose carbon covalent bond is there with attach some electron withdrawing group and hydrogen electron donating group is there, hydrogen. So once the heterolytic bond fission means one carbon atom that bond pair electron due to the reaction condition, due to the reagent, due to the solvent, that bond pair electron between two atoms withdraw towards itself. Suppose this carbon withdraw towards itself and form a negative charge means C negative charge means this is carbon ion formed. But another one, due to the loss of the electron, it's form a carbocation, positive charge. So I mention here organic species which has a carbon atoms contains 6 electrons and has a positive charge. See, so this is carbocation. So today we will discuss in this class carbocation. In next slide we will discuss the carbon ion. So in carbocation 3 bond is there. 3 bond means 6 electrons. 6 electrons is there and 1 positive charge is there. So this is carbocation. So carbocation contains 6 electrons, 1 positive charge. And this is the one reaction intermediate. So intermediates means high energy is there. Energy is high. When a chemical species contain high energy, so that species is highly unstable. So that's why carbocation is unstable. So what is the hybridization of carbocation? Generally all carbocation sp2 hybridized. So and is geometry trigonal planar, TGP, trigonal planar. So how that structure is? Suppose this carbocation attached with 3 hydrogen. So carbon, one hydrogen bond and 1 hydrogen bond. So 6 bond is there and this geometry is trigonal planar. One plane is there, that 3. This bond angle is 120 degree. And 1 is unhybridized pure metal, empty pure metal, unhybridized pure metal and contains a positive charge. So this bond angle is 120 degree. That bond angle is 120 degree and this is trigonal planar. And some carbocation is sp hybridized, like vinyl cation, sp hybridized, like. So generally this is sp hybridized, sp2 hybridized, and sp hybridized carbocation means CH2 double bond CH plus means vinylic carbocation generally sp hybridized. When a carbocation means positive charge contain carbon attached with double bond, this carbon is sp hybridized. So this is the hybridization. And what is the nomenclature? Of carbocation? Generally any carbocation nomenclature is alkyl group and then cation nomenclature. Suppose alkene name plus cation term will come. So we understand structure,
we understand formation and nomenclature. Nomenclature means alkyl group, alkyl name, then cation. Suppose this is the methyl carbocation, means methyl then cation, ethyl then cation, isopropyl then cation, means first alkyl name attached with cation term. So this is called the carbocation nomenclature. So got my point? So next we have to understand the important term is stability classification, carbocation classification. So generally we understand this is vinylic carbocation. Vinylic carbocation means when a carbon atom carbocation attached with a double bond, this is called the vinylic carbocation. And when a carbocation phenyl benzene ring form a carbocation, this is called the phenylic carbocation. And alkyl group, when alkyl group remove one hydrogen and form a alkyl carbocation. And allylic carbocation means when a carbocation next to the double bond, means double bond first carbon attached, means carbocation first carbon attached with double bond, means first carbon alpha position double bond is there with respect to carbocation. This is the allyl carbocation. So degree means when a carbocation attached with only one carbon atom, suppose this carbon atom attached with one carbon atom, directly attached with one carbon atom, this is 1 degree. When a carbocation directly attached with two carbon atom, this is called 2 degree carbocation. Means this carbocation attached with this carbon and this carbon, that's why 2 degree carbocation. When a carbocation attached with 3 carbon atom, 1, 2 and 3, this is 3 degree carbocation. So this is the classification: 1 degree, 2 degree and 3 degree. And this carbocation don't have any carbon atom. So that means this carbocation don't have any carbon atom attached. That's why this is the methyl carbocation. There is no degree of carbocation. Here this carbocation directly attached with one carbon atom, that's why 1 degree. This carbocation attached with one alkyl group, 2 degree, 2 carbon atom. This carbocation attached with 1, 2 and 3 carbon. So this is 3 degree carbocation. 1 degree, 2 degree, 3 degree. Got my point? So 1 degree, 2 degree, 3 degree. Finally we have to understand what is the stability of carbocation. Generally carbocation is electron deficient group. So electron deficient group means if you supply the electron, if you push the electron to the carbocation, the carbocation will stable. Means इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन पुश करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा तो उसको स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा. और उससे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे, उससे इलेक्ट्रॉन पुल कर लोगे, उससे इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है. सो इधर कुछ क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है? रेजोनेंस प्लस आर प्लस एम, प्लस आर प्लस एम. प्लस आर मीन्स जो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुश करता है उसको प्लस आर बोलते हैं. और जो मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बाय द मेसोमेरिक इफेक्ट, उससे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है. इसलिए मैं इधर लिखा स्टेबिलिटी ऑफ ए कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस. रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होता है. सेकेंड, हाइपर कॉन्जुगेशन. कोई भी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी इतना इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर. एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर इज देयर. दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर. मींस एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है. एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है. Got my point? So four stabilizing factor is there.
of carbocation. So first of all we have to discuss the vinylic and phenylic carbocation. So vinylic carbocation means already discussed, when a carbocation attached with double bond, this is called the vinylic carbocation. So vinylic carbocation is sp hybridized carbon. So sp hybridized carbon means percent of s character 50%. So परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है. परसेंट ऑफ, सपोज मैं इधर मेंशन करता हूं sp3 परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 25%, sp2 33.33%, sp 50%. मीन्स एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर इंक्रीज होता है. तो ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पास परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने के पावर ज्यादा है, लेकिन उसके पास पॉजिटिव चार्ज है. तो जिसका इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पुल करने के पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है. जितने भी कार्बोकैटायन है वो विनाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल है. ओके, सो परसेंट ऑफ एस, ड्यू टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई विनाइलिक कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल कंपेयर्ड टू अदर कार्बोकैटायन. बट vinylic and phenylic, if we compare vinylic and phenylic means when a benzene ring means phenyl group, benzene ring, when a benzene ring contains the positive charge, it is unstable than vinyl group, vinyl carbocation से भी phenyl carbocation is unstable. Why? Due to, see, benzene ring 6 pi electron is there, 2 6 pi electron is there, planar, so aromatic stabilization is there, aromatic stabilization is there. Once the carbocation is formed, what happened? That aromatic stabilization is destabilized. Why? The planarity will changed. Once we planarity will change, the 6 pi electron is there, but conjugation is not possible. Means here what happened? So stability, molecule का जो stability था वो भी डिक्रीज हो गया. मीन्स उसको कार्बोकैटायन आने से मॉलिक्यूल का खुद का जो स्टेबिलिटी था थ्रू द एरोमेटिसिटी, थ्रू द रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस, इधर क्या हुआ, इधर प्लेनरिटी चेंज हो गया, sp2 कार्बन asp कार्बन हो गया, asp, और बाकी सब sp2. तो sp और sp2 कार्बन के ऊपर प्लेनरिटी चेंज होने से उसका डीलोकलाइजेशन, उसका मॉलिक्यूल का रेजोनेंस, उसका एरोमेटिसिटी डाउन हो जाता है. इसलिए उसका जो फिनाइल कार्बोकैटायन जितने भी कार्बोकैटायन है वो सबसे अनस्टेबल है. सो इसके दोनों के ऊपर कंपेयर करेंगे तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? विनाइल का स्टेबिलिटी ज्यादा है. फिनाइल से, क्योंकि विनाइल sp हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए, उसका s कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से उसका डिस्टेबिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इधर एरोमेटिसिटी मींस एक गुड स्टेबिलाइजेशन फैक्टर वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. इसलिए क्या है, इसलिए phenylic carbocation is least stable in all carbocation. Got my point? Okay, so next allylic carbocation means alkyl carbocation. Alkyl means when a alkane remove hydrogen, then alkyl carbocation is formed. So alkyl carbocation stabilized by hyperconjugation. So hyperconjugation होने से देखो
तो अल्फा पोजीशन, कार्बोकेटायन का रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होने से उसका स्टेबिलाईजेशन इंक्रीज होता है। देखो इसमें कुछ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन नहीं है मिथाइल में, क्योंकि ओनली मिथाइल है। इसमें देखो फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है। इधर देखो इस कार्बोकेटायन के साथ 2 कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन है, ए भी अल्फा कार्बन है, ए भी अल्फा कार्बन है, तो ए अल्फा कार्बन के साथ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है। इधर देखो 1 2 3 अल्फा कार्बन के साथ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है। तो उसका स्टेबिलाईजेशन हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन में देखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने से उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। इसलिए देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल, क्योंकि मिथाइल में कुछ स्टेबिलाईजेशन फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन ही नहीं है। ओके, सो फर्स्ट तो लीस्ट स्टेबल हो गया फिनाइल, इसके बाद विनाइल, इसके बाद 3 डिग्री इसके बाद मिथाइल, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मीन्स मैं लास्ट में पूरा कंपेयर करा दूंगा कौन सी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कार्बोकेटायन सबसे लीस्ट स्टेबल है। सो इसके बाद एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन क्या होता है? जब कोई कार्बोकेटायन का अल्फा पोजीशन या नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन। सो एलाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबिलाइज्ड बाय कंजुगेशन देखो ये sp2 प्योर वाइटल वैकेंट प्योर वाइटल डबल बॉन्ड का कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए वो बहुत ही स्टेबिलाइज्ड है। देखो इधर ऐसे कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन होने से ये स्टेबिलाइजेशन इंक्रीज होता है। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो कंजुगेशन क्यों होता है? कंजुगेशन का क्राइटेरिया में दूसरा क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो देखो कंजुगेशन थ्रू स्टेबिलाइज्ड हो रहा है। इधर देखो इधर भी कंजुगेशन पॉसिबल है, बट इधर एक एल्किल ग्रुप भी है। एल्किल ग्रुप मींस उधर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजेशन ग्रुप मींस एल्किल ग्रुप प्लस आई देते हैं। एल्किल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन है, तो उसका एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजेशन फैक्टर इधर है। मींस कंजुगेशन भी है एज वेल एज प्लस आई भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है। मींस एल्किल ग्रुप में अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो उसका हाइपर कंजुगेशन में टेक पार्ट होता है, और उसका प्लस आई ग्रुप भी है, तो उसका ओनली कंजुगेशन है, उसका हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन है। इसमें देखो कंजुगेशन तो हो रहा है मींस रेजोनेंस तो हो रहा है, एज वेल एज 2 एल्किल ग्रुप इज देयर। 2 एल्किल ग्रुप मींस 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 एल्किल ग्रुप का नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए उसका हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा है। तो इसका जो स्टेबिलाइजेशन फैक्टर 3 डिग्री एलाइल ग्रुप, एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो मैं इधर जो 3 टाइप का कार्बोकेटायन दिखाया, उसमें सबसे स्टेबल है 3 डिग्री एलाइल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसके बाद एल्किल ग्रुप आता है। एल्किल ग्रुप का फर्स्ट आता है 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद मिथाइल, इसके बाद आता है विनाइल, फाइनली लीस्ट स्टेबल आता है फिनाइल। सो नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस ऑल्सो another 2-3 different type carbocation. So got my point? If you want to take the screenshot, you can take. Then I will go to the next slide. So in this next slide we will discuss the benzyl carbocation. Benzyl carbocation means one benzene ring and one CH2 group at a CH2 plus means methyl group. Methyl group remove the one hydrogen and this is called the benzyl carbocation. So benzyl carbocation stabilized by resonance. Resonance means plus or effect. See means that CH2 group pull the electron from the benzene ring and form like that CH2, and this is carbocation, and like that then again this will come here, means that carbocation stabilized by resonance, and that positive charge
dispersed by throughout the ring. That's why benzyl carbocation is more stable than this type of carbocation. See here almost four resonating structure is there, So once that one benzene ring attached with CH2 group, that is benzyl carbocation. So benzyl carbocation is more stable by another carbocation. Once the phenyl ring, benzene ring means C6H5, that's why I mentioned the C6H5. Once that another one benzene ring attached, that's why more resonating structure we can draw, and this is more stable than one benzene ring. There 3 benzene ring more stable than 2 benzene ring. So benzyl carbocation stability first is this one 3 degree, 2 degree, 1 degree, means this is the more stable by the resonance. And aromatic carbocation means when a carbocation contain 4n plus 2 number of pi electron, and as all involved atom are coplanar, that this type of atom is highly stable by aromaticity. Here see 2 means 4n plus 2 means n equal to 4 into 1 plus 2 equal to 6 pi electron is there, and all atom are sp2 hybridized, that's why conjugation happening, aromaticity is gaining. So this is highly stable than this benzyl carbocation. So sixth one is the bent resonance. Means this is cyclopropyl methyl carbocation. This is 1 degree carbocation, but here extra stability is there due to the, suppose this is the orbital picture like that, suppose CH, 1 p orbital is there, due to the conjugation of that carbocation through the cyclopropyl ring, bent orbital, and this is sigma resonance. This is called the sigma resonance, and this stabilization means this 1 degree carbocation stabilization is higher compared to ordinary 1 degree carbocation. So once the cyclopropyl group increases, the stability will increases. And also remember, this stabilization is higher than that if you compare with that 3 cyclopropyl methyl carbocation with aromatic this carbocation is more stabilized than that. This is called the bent resonance, and this stabilized by the cyclopropyl bent orbital with the carbocation empty orbital. So overall stabilization, if you compare, overall stability order of carbocation, first one is tricyclopropyl methyl carbocation, then dicyclopropyl methyl carbon, after that aromatic this tropylium cation. Due to tropylium cation, aromatic stabilization is higher, but here 2 and 3 cyclopropyl group is there, that's why that carbocation vacant p orbital stabilized by bent orbital of cyclopropyl carbocation, and more carbon is there here, that's why it is more stable compared to aromatic stabilization. So this is the tricyclopyl is the highest stabilization. After that dicyclopyl methyl carbocation, this is called the sigma conjugation, sigma p orbital conjugation. This is aromatic stabilization. After that is resonance stabilized benzyl triphenyl cation 3 degree. So this is resonance stabilized, 3 benzene ring is there, so resonating structure is more, that's why compared to 2 degree and 1 degree, 3 degree is more stable than 2 degree. Then benzyl carbocation, after that monocyclopropyl methyl carbocation is there. After that
allylic carbocation. Allylic carbocation stabilized by conjugation. Stabilized by conjugation. So allylic 3 degrees higher stable than 2 degree, then 1 degree. After that alkyl. Alkyl carbocation. Alkyl carbocation stabilized by inductive effect, plus I effect, and as well as hyperconjugation effect. After that methyl. Methyl carbocation, there is no stabilizing factor. That's why in the alkyl group methyl, after that methyl carbocation is stable. After that this is vinyl carbocation. Vinyl carbocation, this is not that much stable due to this is the sp carbon, this is the sp carbon, percent of s character is higher. That's why this is percent of s character higher, means it wants to pull the electron from other side, but here positive charge is there. Any electronegative atom, if positive charge is there, that one is very unstable. That's why this is higher electronegative, percent of s character इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल. आफ्टर दैट acetylene carbocation, this is also very unstable. Least one is the phenylic carbocation. This is unstable due to in the benzene ring, this is aromatic stabilization, but once the positive charges come in the benzene ring, that one is for aromatic stabilization is destroyed due to the anti-aromatic form. Aromatic stabilization is destroyed due to the planarity of the molecule. This is the sp carbocation, this is the sp, this carbon is sp, but all are sp2. That's why planarity is destroyed, that aromaticity of the molecule is destroyed. That's why it is destabilized from the mother molecule, from its mother molecule. So I give two questions. First one is the increasing stability order. Increasing stability order 3 degree alkyl carbocation. This one is the phenylic carbocation. This is benzylic, and this is the this is 3 degree, and this is 2 degree alkyl. So first one, that C increasing order. So C is resonance stabilization is higher than that other stabilization factor here. So resonance stabilized, that's why C is the highest stabilized carbocation. After that 3 and 2, here 9 hyperconjugative hydrogen is there and 3 methyl plus I effect is there. That's why A is the second stable carbocation. After that D, and least one is the B, due to in this carbocation aromatic stabilization is destroyed due to the planarity of the molecule. That's why this is the stability order of 4 carbocation. Here stability order, this is aromatic molecule, 4n plus 2 number of pi electron is there, 4n plus 2 number of pi electron is there, n equal to 1 means 6 pi electron is there, all are sp2 carbon. That's why this molecule stabilized by resonance aromaticity. And this is the non-aromatic, this is sp3 carbon, this is sp3 carbon, this is sp2 and this is sp2. If any cyclic molecule contain two different type of carbon, means different hybridization carbon, this molecule is non-aromatic due to this is non-planar, planarity is not there, and this is anti-aromatic. So anti-aromatic molecule, so first one is the more stable, then this one, then anti-aromatic molecule. This carbocation stabilized by conjugation, but here is the anti-aromatic molecule, 4n number of pi electron is there. That's why this is the higher stable, then non-aromatic, then anti-aromatic.